Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back for the GATE aspirants. First time, the first ever strategy in a bilingual session. तो पहली बार बेटा मैं आप लोगों के लिए bilingual strategy लेके आ रहा हूं, in which we are going to discuss the GATE 26 as well as ESE 2026 strategy. तो GATE 26 और ESE 26 दोनों का strategy डिस्कस करेंगे. फटाफट सभी लोग आ जाइए. कम ऑन एवरीबॉडी, जॉइन एवरीवन क्विकली क्विकली क्विकली. एवरीवन जॉइन. चलिए, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड बच्चों. क्विकली एवरीबॉडी जॉइन. तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस सेशन? इस सेशन में क्या कवर करने वाले हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ईसी. इलेक्ट्रिकल ईसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा. देन वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर गेट. गेट का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होगा. देन वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर ईएसई एज वेल. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी ईएसई का भी कवर करेंगे. चलो विनीत भाई, आपको मदद मिली क्रैश कोर्स से. आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली होप कि इस साल आपका एक टर्न अराउंड ईयर हो और आप इस साल कोई ना कोई एग्जाम जरूर फोड़ करके कॉन्फिडेंस अचीव करो और एक बहुत अच्छे लेवल को आप अचीव कर पाए. चलिए, तो एवरीबॉडी रेडी? आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? चलिए, सो लेट मी गेट स्टार्टेड. बेटा स्ट्रैटेजी विल रिमेन सेम. आर्यन बेटा फॉर इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन. इट्स जस्ट दैट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे पास ओनली इलेक्ट्रिकल और ईसी के हैं. ठीक है, और आईएन के लिए भी व्हाट विल बी डिफरेंट? द ओनली कोर सब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट, राइट? चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर ईई पीपल. नाउ इफ यू सी द नेटवर्क एनालिसिस बेटा, in network analysis the first two chapters are the basic. okay, these two are the basic chapter जो कि आपको कवर करना ही पड़ेगा. okay, because these chapters will be used in network as well as in the other subject. तो ये दो चैप्टर इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट में भी काम आएंगे और नेटवर्क में भी. now from the weightage point of view I have updated the weightage till 2025. मैं वेटेज 2025 तक का लेके बता रहा हूं. ठीक है, 2025 तक का. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चैप्टर्स आर ट्रांजिएंट एंड द एसी एनालिसिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर ट्रांजिएंट एंड द एसी एनालिसिस. ओके, गेट 26 का बेटा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा नित्यानंद. नो नीड टू वरी कि आप कैसा पेपर 26 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, ऐसा मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा. Is that clear? So the most important two chapters are transient and the AC analysis. After that for electrical coupled circuit. So this is your first priority. These two are also most important. Then second, then third. Okay. And this is a prerequisite. Three-phase circuit prerequisite होता है बेटा for many other subject like machine, power system, power electronics. So three-phase circuit will become a prerequisite for electrical core subject. That is why we cannot miss this subject. Okay? समझ गए? तो देखो दो तरह की चीजें कवर करना बहुत जरूरी है. So two things are very important for all of you. One is the basic chapter of each and every subject. Second is the chapters having the highest weightage. हर सब्जेक्ट के बेसिक चैप्टर कवर जरूर करिए और जिन सब्जेक्ट का या जिन चैप्टर का वेटेज हाई है वो जरूर करिए. On an average, beta, on an average, the weightage of network will be 9 marks. ठीक है, so 9% to 10% paper will come from the network analysis and beta this is consistent even in ESE. ESE के अंदर भी जो आपका नेटवर्क वाला पार्ट है, सर्किट वाला पार्ट है, उसका वेटेज आप मान के चल सकते हो 10% के आसपास रहेगा. ओके, तो 10% means even in ESE prelims out of 300 marks you can easily expect 20 to 30 marks from basics, that is electrical circuit and the electric field. Okay, next is signal and system. If you see these two are the basic chapter. पहले दो चैप्टर आपके बेसिक चैप्टर हैं. बेसिक चैप्टर मींस दीज आर मस्ट.
You cannot cover this subject without learning these two chapters. After that, Fourier transform is very, very highly important for electrical people. Laplace is a prerequisite for many subjects like network, control. This is a prerequisite. Then the next priority should be Z transform. Okay. So this is first priority. These two are first priority. Second is Z transform. So at least this much you have to cover. और बेटा इसका वेटेज भी 9 मार्क्स के आसपास रहेगा. The average weightage will come out to be around 9 marks, same as the network. So these two are really, really high scoring subject, and network you can complete in around 100 hours plus like 50 hours practice. Similarly, signal system like for electrical 100 hour. Again, 40-hour practice because signal questions are not as lengthy as network. In signal you can solve problem in lesser amount of time. Signal में practice में time थोड़ा कम लगेगा network से, लेकिन course duration almost same होगा. Now what about control system? In control system, this is the basic chapter transfer function, which is mandatory to cover. After that, if you see, this also you should cover because this is also a basic chapter. Then the most important chapter is the frequency response. This is also first priority. Frequency response is also very important. After that, what you can cover is second topic, state space, and third priority, controller and compensator. Okay. In control system, you need almost 90 hours. Plus practice, you can give around 50 hours. Okay. So 40-50 hours of self study is required other than lecture. बेटा lecture के अलावा भी 40-50 घंटे अपने invest करने पड़ेंगे. Then only you can gain a command on any subject. Remember this. Now, what about analog? In analog, beta, all the topics are discrete topics. You can cover diode circuit and op-amp. These have the highest weightage in analog electronics. For electrical, analog will be somewhere around 80 hours for electrical. Plus, you can assume 50 hours of practice. Okay. For electrical, I am saying EC obviously needs more time in analog. And if you see, the weightage is somewhere around 6 marks. For analog, the weightage is around 6 marks. So for electrical, analog electronics has lower priority. But listen to me very carefully, beta. Electrical के लिए भले ही analog low priority है. But in case you are seeking a career in VLSI, if you want to do masters in VLSI, take analog very, very seriously because you need to be a master of subject like analog electronics in case you wish to get into VLSI. Because अगर आपका aim VLSI है ना, तो 3 subjects become very, very important for you. EDC, analog and digital. Especially analog and digital are highly important for you if you want to enter the microelectronics, nanoelectronics or VLSI field. If you want to get into semiconductor fabrication, the field like semiconductor technology in the MTech, then EDC becomes important. अगर आप फैब्रिकेशन साइड पे जाओगे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच चुनोगे, तो आपके लिए ईडीसी इंपॉर्टेंट होता है. बट फॉर वीएलएसआई योर एनालॉग एंड डिजिटल आर हाईली इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? इन द रीसेंट ईयर्स द वेटेज ऑफ डिजिटल हैज डिप्ड. रीसेंट के कुछ ईयर में बेटा डिजिटल का वेटेज गिर गया है. इट हैज बीन अराउंड 3 मार्क्स. ओके विनीत भाई अभी इस पे आएंगे, अभी एएमए नहीं कर रहे हैं, ठीक है. So now in this case, this is the basic chapter that you need to cover. Other than this, you need to cover sequential circuit. At least this much if you cover sequential circuit along with the logic gate, you can get maximum marks in digital. तो भले ही 3 नंबर का आ रहा है, बट इसमें से 2-2.5 नंबर आप ला सकते हो अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हो, ठीक है. These 2 chapters are most important. For EMFT, we see, so vector analysis, this is covered in mathematics also. So this is common with maths. इसीलिए आपको इसका वेटेज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है. Because this is covered at 2 places, mathematics and EMFT. So our focus should be on electrostat and magnetism.
and you can see the approximate weightage of EMFT is 5 marks. Now for digital, if we see, around 70 hours for electrical plus 50 hours you can dedicate for practice. For EMFT, around 60 hours for syllabus plus you can dedicate around 25 hours for practice. तो अगर आप ये भी देखिएगा बेटा, मार्क्स के साथ एफर्ट देखिएगा, ऑलवेज सी द एफर्ट अलोंग विद मार्क्स. लाइक इन एनालॉग आई कैन गेट 6 marks but I have to invest 130 hours. In EMFT I can get 5 marks but I only have to invest 85 hours. तो जब भी इस चीज पे बात आ जाए ना, दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, सी द वेटेज अलोंग विद द एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रैक दैट वेटेज. एफर्ट भी देखिएगा, बस इस चीज के पीछे मत भागिए कि सर इसका वेटेज ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स का आता है, बट अगर उतने आवर्स ही मेरे पास नहीं है तो मैं उसके वेटेज का क्या करूंगा. इफ यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट आवर्स देन द वेटेज डज नॉट मैटर. ऑलवेज सी द एफर्ट एज वेल एज द रिवॉर्ड. Now mathematics, easily the highest weightage subject after aptitude. Apti के बाद सबसे ज्यादा weightage mathematics का होता है. The 3 pillars of mathematics are linear algebra, calculus, probability. If you cannot cover the complete maths, at least cover these 3 units. पूरा ना भी कर पाए बट ये 3 चीजें जरूर कवर करिएगा. For entire mathematics, around 120 hours of theory will be required. Plus easily 60 hours practice will be required. So this will demand a lot of time for these 12 marks. But believe me when I say this, it is worth it. भाई worth it है. माना टाइम ज्यादा लग रहा है, 12 marks मिल रहे हैं, लेकिन this will form the base of your engineering and this will be very very helpful in learning all the other subjects, even subjects like signals and system. Signal system जैसे subject सीखने में भी काम आएगा. Even for engineering services, for electrical, mathematics is very important. It is asked in non-technical as well as technical. So in the ESE prelims, you will have questions from mathematics in paper 1 as well as paper 2. तो अगर ESE का सपना देख रहे हो तो भी मैथ्स अच्छे से करना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आएगा. Yes, this is for electrical. I'll come to ECE after this. ठीक है. Ashwini beta, congratulations for getting selected beta. Coming to machines, the weightage is around 10 marks and in the recent years the most important topic is induction machine. The second priority should be transformer, third to DC, fourth to synchronous. This should be the priority order for machines. For machine, you will need around 160 hours for theory plus 80 hours for practice. But why is machine important? क्योंकि even if you go into a PSU or you go into MTech, machines will be asked in interviews. तो मशीन को सिर्फ ये मत सोचिए कि सर यहाँ 10 ही नंबर मिल रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, मैथ्स में 12 नंबर मिल रहे हैं कम टाइम के अंदर. You are getting 12 marks in less duration. You are getting 10 marks in more duration, but machines is highly important from interview perspective. In every interview, machine will definitely be asked. For power system, the weightage is around 9 marks. Now, this is the most important unit, transmission distribution. Okay. Second priority you should give to load flow, less effort, more reward. Simple. Third priority, fault analysis. Fourth, you can give to economic load dispatch. Again, load flow and economic dispatch are less duration topic, but they have good weightage. Then fifth priority should be power system stability. Sixth priority protection, and generation you can skip. So power system requires around 100 hours of videos plus almost 40 to 50 hours of practice. Okay, for 9 marks. The weightage of machine and power system is very close. Machine का थोड़ा ज्यादा है, but दोनों का weightage काफी close है. But power system में time कम लगता है and it is lesser difficult as compared to machine. But for power system, synchronous machine becomes a prerequisite. For power system, synchronous machine prerequisite बन जाता है. बेटा let me give you an example. इस साल अगर ECE का फर्स्ट रैंकर देखोगे
So EC first ranker belongs to third year. They are not even in the final year. So yes, it is possible to crack GATE in the third year, that too with a top rank. But everything depends on your commitment, on your dedication. Power electronics. In power electronics, the most important chapter is phase controlled converter, chopper, then inverter, and the least important is semiconductor device. You will need 70 hours to cover the concept and around 30 hours for practice. So the weightage will be again around 9 marks. So the weightage of machine, power system, power electronics, this is the core of electrical, is somewhere around 30 marks. Okay. And this is very important from the interview perspective. These three subjects will judge whether or not you are a good electrical engineer. आप एक अच्छे इंजीनियर हैं या बुरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो आपका इंटरव्यू बताएगा, वो भी इन तीन सब्जेक्ट्स के आधार पे. So that is why you should be highly serious about these three topics. What about measurement? If you need, you can skip measurement. Not needed, beta. Only 2-3 marks of weightage is there in measurement. Like this year, it was 3 marks. But if you want to cover, it will hardly need 30 hours. Plus 20 hours of practice is also enough. The most important topics are electromechanical instrument, error analysis, and bridges. This much you need to cover. If you cover these three topics, that is enough. If you cover these three topics, it is enough. और इसमें time भी कम लगेगा and the weightage is also very, very low as per the GATE perspective. The network control power electronics signal power system completed. What to start next? Signal system. Okay. And then after that, you can go for machine. Now, for EC, quickly I'll go through EC as well. The network basic and network theorems are the basic topics for EC also. But if you see, the highest weightage again is from transient and the AC analysis. But here two-port network is important. आप देखिए इलेक्ट्रिकल में two-port network was not important, but for EC two-port network is important. For AC, the duration required for network will be 80 hours because some topics are missing. Plus 50 hours of practice. The weightage is around 8 marks. EC में जो है ना, आपको सारे टॉपिक करने, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं और इसमें अराउंड 130 आवर आपके इन्वेस्ट होंगे. 8 नंबर का ये आने वाला है. फॉर सिग्नल सिस्टम, नाउ दिस बिकम्स द कोर सब्जेक्ट फॉर EC because for MTech admission you need to get into signal processing. Signal and system will be very important, and also this is a prerequisite for your communication system. Now these two are the basic chapters. These are mandatory. Then most important is the Fourier transform. As we saw in electrical also, this is very, very important. Fourier series is also decently important. Sampling also is decently important. Then you can keep less priority for Z transform and Laplace transform. And DFT, FFT you can keep at the least priority. So around 10 marks of weightage. But you will need more time than electrical in EC. 120 hour plus 60 hour. क्योंकि सिग्नल सिस्टम का सिलेबस EC के अंदर ज्यादा जरूरी है. हाँ आशुतोष भाई, EC वालों को कपल्ड सर्किट नहीं करना है. फॉर EC कपल्ड सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम सिलेबस इज मोर in EC as compared to electrical. So you will need more time and the weightage is also more than electrical, around 10 marks. Now control system, this is the basic chapter that is necessary. After that, time response should be the first priority. Frequency response also should be the top priority. But if you see, in electrical, Routh criteria is not very important. But in EC, it is very, very important. Okay. Then second priority should be Routh. Third priority, this is state space. Fourth priority, control system design. And last priority should be root locus. Here you will need same time as electrical. Okay. Control system mein the syllabus is same for electrical as well as EC. So you need same amount of time and the weightage is also similar, 8 marks. Okay. But control system is not very crucial for EC. Why?
because nobody is going to ask you control system in EC. Control system is the core of instrumentation and to a certain extent electrical. कंट्रोल सिस्टम आईएन वालों का कोर बनता है और कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट फॉर ईसी इट इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, नॉट हाईली इंपॉर्टेंट. नाउ एनालॉग, दिस इज द कोर ऑफ ईसी. हियर यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम, अराउंड 120 to 130 hours for theory, plus you need around 60 hours of problem solving. And the weightage, if you see, the weightage is also high, 12 marks. 12 marks weightage. So here I will say all the topics are important. Do not leave any topic, but you can keep this at the less priority: feedback amplifier and oscillator. But other than that, MOSFET, BJT, diode, op-amp, everything is important for you. Do not skip any chapter. Do not skip any chapter, because this is your core. This is the place from where you will be judged. You will be given admission on the basis of analog circuit. You will be asked interviews analog circuit in VLSI. इंटरव्यू के अंदर बेटा VLSI में एनालॉग सर्किट पूछा जाएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा. What about digital? Digital is again a prerequisite for MTech in VLSI. So here beta, this is the basic chapter. Without this you cannot learn digital. Okay. Now combinational logic should be the first priority. Sequential also first priority. Data converter also. Logic family, no. You just need CMOS in the logic family. EC वाले बच्चों को सिर्फ CMOS सीखना है लॉजिक फैमिली में. And micro and CO also less priority because the weightage is less. ये additional है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उतना आता नहीं है. The weightage is around 10 marks. So you will need more time here, around 110 hours plus 60 hours of practice. So you need more time than electrical in digital because your syllabus is vast as compared to electrical. EMFT, electric and magnetic field beta, electric and magnetic field, this is around 2 marks average. Plane wave 1 mark. Transmission line 3 marks. Waveguide 1.2 marks. Okay. Vectors around 0.2. Antenna 0.4. So 2, 3, 3, 6, 7.2, 7.6 for around 8 marks. Okay. So the total is around 8 marks for EMFT. So this topic generally people skip in EMFT, but if you see, in 2025 EMFT, they were asking the basic electric and magnetic field. So ये मत सोचिए बेटा, if this is not mentioned in the syllabus, they will not ask this, because entire EMFT is based on the basic of electric and magnetic field. तो भले उन्होंने लिखा नहीं है electrostatic magnetism, but you need to prepare these topics in case you wish to crack EMFT. So this is the base, after which you need to go after plane wave, then transmission line is highly important, then waveguide, then antenna. Okay, then antenna. Is that clear? So for completing the entire syllabus, you will need 100 hours along with electric magnetic field plus 50 hours of practice. The total weightage will be around 8 marks. The total weightage will be around 8 marks. What about mathematics? Again, beta, same thing, same as electrical. These three are the pillars of mathematics. You need around 120 hours for mathematics plus 60 hours for practice. The weightage is also same, around 12 to 13 marks. Okay. What about EDC? In EDC, beta, these two units are the most important, semiconductor and the diode. Most important. Then you go after the MOS capacitor and then you go after BJT. But your first priority should be semiconductor physics and diode. The weightage is around 8 marks. You need around 80 hours to cover this, plus around 40 hours for practice. Okay, 40 hours for practice. But again, beta, if you wish to go to VLSI, EDC is important, especially when you enter fabrication branches like semiconductor technology. जैसा मैंने पहले भी बोला, अगर fabrication side जाओगे तो EDC is the most important part.
Last topic is the communication. So here beta all the syllabus is evenly divided. If you see the weightage is evenly divided. Here you need around 130 hours plus easily 70 hours for practice. Signal system is the prerequisite. So you will need around 200 hours and the weightage is also very high. So the highest weightage belongs to analog electronics and communication system. तो दो सब्जेक्ट का हाईएस्ट वेटेज होता है एनालॉग और कम्युनिकेशन का. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी. ईसी वालों को सेकंड पेपर कौन सा देना चाहिए? आईएन, बिकॉज इलेक्ट्रिकल यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर बेटा. इन इलेक्ट्रिकल यू नीड मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट. तो ऑल दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्कलोड. Even for topics like network analysis, there is higher syllabus as compared to EC. बेटा बुक लिस्ट जाननी है, जैसा मैंने बोला, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था बुक लिस्ट का, उस पे आप कमेंट करेंगे तो आपके डीएम में आ जाएगा बुक का लिस्ट. प्रखर भाई, गेट 2026 के लिए रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स आएगा, बट लाइव रैंक इंप्रूवमेंट कम क्रैश कोर्स जो आता है वो ईयर के मिड के बाद आता है. अगर आपको अभी से करना है तो यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड कोर्स. अरुण भाई, अगर राइट नाउ 2.5 सब्जेक्ट्स आर डन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आई थिंक यू शुड गो फॉर फुल सिलेबस. नाउ विच आर द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट? सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ईएमएफटी और ईडीसी और मैथ्स. एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट यू कैन स्टार्ट. ओके, एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इंस्टाग्राम पे बेटा एग्जाम दोस्त के पेज पे जाना, उसमें रील्स में जाओगे आपको मिल जाएगा रिकमेंडेड बुक्स वाला. ठीक है, एग्जाम दोस्त पे मिलेगा, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं. बुक सेशन बनाइए डिटेल, चलो मैं बना दूंगा, ठीक है, डोंट वरी. वैसे पढ़ा होगा यार मेरा बुक सेशन. डीपी भाई एक चीज सर्च कर लो, रुको मैं तुम्हें लिंक ही दे दे रहा हूँ, रुको, तो बिना मतलब परेशान रहोगे. मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग सर्च कर लिया करो मेरे नाम के साथ टॉपिक. जस्ट अ मिनट. ये लो भाई, ठीक है, ये वीडियो देख लेना, हो जाएगा काम. चलो, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट कंट्रोल एंड नेटवर्क. इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बेटा मैं कोई अलग से कोर्स तो नहीं निकालूंगा प्रखर भाई, क्योंकि उतना इंटरेस्ट है नहीं बच्चों का. आइए, so you can start with any of these topics. These are the basic topics that do not have any prerequisite. इन टॉपिक्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए, तो आप जो सब्जेक्ट से चाहें यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि जो मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है बेटा, जो मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है, मैं सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूं. फ्रॉम 28th of April I am starting the batch with signal system and the format will be same as this video. Format इसी वीडियो जैसा होगा, it will be bilingual. Okay. Now, what is daily routine? So if you are starting right now, you can study one subject at a time and still you will be able to complete syllabus. See, how many days are left in the GATE exam? 9 months. Okay, that means approximately 270 days. Let me count 250 days of preparation. Okay, or we can say number of week, if I say 7 3 21 40 7 7 49, around 35 weeks. So if I dedicate every week 4 hours during weekdays and 8 hours during weekend, 16 and 20 is 36. So hours is how much? 35 into 36. So 1080 and 180, 1260 hours. Okay. Now this, in completion, you can dedicate around 1000 hours for syllabus completion, for revision around 200 hours, then mock test around 60 hours. This is a very conservative estimate that I have taken. मैं एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चल रहा हूं,
बट आप अगर ज्यादा टाइम देते हो तो यू कैन इवन कवर इन वेरी वेरी कंफर्टेबल मैनर, वेरी स्मूथ मैनर, अगर आप ज्यादा टाइम दे पाओ। ठीक है, मैंने बहुत कम टाइम माना है, बट यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज टाइम नियर टू द गेट एग्जाम, क्योंकि गेट जैसे जैसे पास आएगा यू कैन इंक्रीज योर ड्यूरेशन। 13721 रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है बेटा, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे कोई सीक्वेंस लग रहा है रीजनिंग का। नाउ focus right now on one subject at a time, so you can attend the live class daily or you can watch the recorded lecture even if you are preparing from YouTube or a recorded course. Okay, it's very very important that you have a proper schedule of watching the video. ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, YouTube से करें या recorded से करें, they do not have a schedule. They do not have a schedule. They'll have the entire day कि यार वीडियो देख लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। There should be a fixed time at which you are going to sit and watch the lecture. You should watch it as if you are watching a live class. जब भी आप लेक्चर देखें लाइव क्लास की तरह देखें, सिंगल सिटिंग के अंदर देखें, आप चाहे रिकॉर्डेड देखें चाहे यूट्यूब देखें, आपको उतनी ही सीरियसली एंड एट द सेम टाइम एवरी डे आपको लेक्चर देखना जरूरी है। You have to watch the lecture every time at the same time. Okay, every day at the same time. And in the remaining time, you should focus on practice. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। Even in engineering services, right now the focus is on numerical, not only GATE. For engineering services, the focus is on numerical. Therefore, your self-study focus should also be on numerical. And remember this beta, especially I am telling this for the people who are following recorded course or YouTube. Even if you complete the lectures without practicing, it's a waste of time. अगर आपने लेक्चर फिनिश भी कर लिए ना, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया बेटा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे बढ़िया है तैयारी छोड़ दो। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, सिर्फ वीडियो देखना चाहते हो, उससे बढ़िया है नाच गाने के वीडियो देखो, एंटरटेनमेंट रील देखो, तैयारी मत करो भाई। ठीक है, डू नॉट ओके, do not prepare if you feel that you are not able to practice and you can only watch the video. अभिनंदन भाई, अभी हम मिस्टेक्स रिजॉल्व भी कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई लिस्ट है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, so that we can improve those mistakes as well in the next edition. Now semester exam, many people will be in their semester, how to prepare with GATE semester exams. तो सेमेस्टर एग्जाम्स में एक वीडियो पर डे देख लेना, तैयारी छोड़ना मत, और अगर वीडियो ना भी देख पाओ तो डू फोकस ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स। गेट से अगर एकदम टच छोड़ दोगे ना कि सेमेस्टर एग्जाम आ गए अब तो मैं गेट कर ही नहीं पाऊंगा, तो बेटा कॉन्फिडेंस किल हो जाएगा, आपका फ्लो चला जाएगा, एंड रीस्टार्टिंग अगेन विल बी वेरी वेरी हाईली डिफिकल्ट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन रिवीजन एटलीस्ट ड्यूरिंग योर सेमेस्टर एग्जाम। एंड ड्यूरिंग कॉलेज वेकेशन, during college vacation it's very important that you give your 100% to GATE preparation. तो जितना भी टाइम आपका वेस्ट हुआ है ना सेमेस्टर्स में, उस टाइम को आप कॉलेज एग्जाम कॉलेज वेकेशन के टाइम में उसको मेकअप कर लीजिएगा। डू मेकअप फॉर योर लॉस्ट टाइम ड्यूरिंग द कॉलेज वेकेशन एंड डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, उसके लिए थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करके अपना गोल अपना विजन क्लियर रखिए। योर विजन योर गोल शुड बी वेरी क्लियर दैट यू आर फोकस्ड ऑन मेकिंग योर करियर, यू आर फोकस्ड ऑन क्लियरिंग ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम rather than running after your semester percentages. Theoretical POV से बेटा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो प्रखर। Now, how to make a schedule? Your schedule should be in sync with the live class. देखिए अगर आप रिकॉर्डेड भी कर रहे हैं तो भी आप ये देख लीजिए, जो हम बैच का शेड्यूल देते हैं आप अपना पर्सनल शेड्यूल वैसे ही बना सकते हैं। यू कैन मेक द सेम शेड्यूल दैट वी आर फॉलोइंग फॉर द लाइव बैच इवन इफ यू आर फॉलोइंग यूट्यूब और यू आर फॉलोइंग रिकॉर्डेड क्लास। एंड सेट वीकली टारगेट्स, यू मस्ट हैव अ वीकली टारगेट्स लाइक हाउ मेनी वीडियोस टू वॉच, व्हाट ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड, व्हाट ऑल क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या टॉपिक कवर करने हैं, कितने वीडियो देखने हैं। यू मस्ट हैव अ वीकली टारगेट एंड दैट वीकली टारगेट शुड बी अचीव्ड इन द सेम वीक। जो भी वीकली टारगेट है उसी वीक के अंदर उसको अचीव करना है। डू नॉट स्पिल ओवर इन द नेक्स्ट वीक, कोई भी टॉपिक इस हफ्ते का नेक्स्ट वीक में नहीं जाना चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिकल बेटा इफ योर CGPA इज अबव 7.5 इट्स गुड इनफ।
तो आप जब अपना शेड्यूल बना रहे हैं, आप संडे फ्री रखिए. डू कीप वन डे इन योर शेड्यूल फ्री. इट मे बी अ संडे और इट मे बी अ वीक डे, एंड यूज दैट डे टू कवर योर बैकलॉग्स. जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, जो भी चीजें आपकी वीक में मिस हुई हैं, डू यूज दैट डे टू कवर योर बैकलॉग्स, एंड ऑल्सो यू कैन कवर बैकलॉग्स ड्यूरिंग कॉलेज वेकेशन. अब देखिए, फॉर इलेक्ट्रिकल व्हाट इज द आइडियल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट. नेटवर्क और सिग्नल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, देन कंट्रोल, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, मैथ्स, डिजिटल, एप्टी, ईएमएफटी, मेजरमेंट. तो मैंने लो वेटेज वाले सब्जेक्ट लास्ट में रखे हैं, ठीक है. और बेटा एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड चाहो तो पैरेलली कर लो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो. Now for ESE technical, the ideal sequence, electrical material should be first because this will be asked in non-tech as well as tech. Then go after computer fundamental, this is easy. Then communication, then microprocessor and basic electronic. अगर मेरे साथ एनालॉग करोगे तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसी में करा दूंगा. When I will teach analog, I'll cover basic electronics and analog electronics this year. So if you will prepare analog with me, this will be covered. Okay. But other than that, this should be your ideal sequence for ESE technical. What about ESE non-tech? These 10 topics are there in ESE non-tech. So mathematics is a low hanging fruit. Mathematics ऐसा है बेटा, इसको easily cover कर सकते हो क्योंकि गेट के लिए कर रहे हो. Again, aptitude you can easily cover. Now, what all topics are easy for electrical and ECE? Ethics is easy. Information communication technology is easy. Environment is easy. Material science में electrical materials anyways you are covering, so this will be highly covered or most of it will be covered. Then rest of that you can decide which you want to cover or not. क्या बचा? F G H, इसको आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, क्योंकि आप ये देखिए मटीरियल साइंस का कम से कम 60 to 70% पोर्शन कवर हो जाएगा. Material science 60 to 70% will be covered with electrical material. Rest 3 topics, it is your choice how much you want to cover or whether you want to leave. But remember, 3 things are very important and very easy for you: ethics, environment and ICT. Because enviro will be asked in AJE exams, like in RRB JE, they are asking environmental. So if you are preparing environmental, you are anyways getting ready for facing AJE exams also. आप AJE भी फेस कर पाएंगे. बेटा मेरे जितने भी नोट्स हैं अभी मैं दिखा दूंगा कहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है. थोड़ा सा रुक जाओ. नाउ फॉर नॉन टेक्निकल यू कैन डेडिकेट 1 or 1.5 hour daily, that is more than enough. One by one you have to cover the subject and make sure that you prepare short notes. क्योंकि देखो नॉन टेक दोबारे पूरा देखना या पूरे के पूरे नोट्स को दोबारे पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द एंटायर नॉन टेक again or watching the non-tech videos again. And for non-tech you should follow Saurabh Kumar Pandey sir. So Arohan Education is there. They have their own app. He is the best educator for ESE non-technical. So I am clearly telling, I don't want to get into non-technical. That is not my forte. मेरा strong point नहीं है भाई non-technical. मैं prepare करके पढ़ाऊं, क्या फायदा जब एक बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान बैठे हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो आप उनसे पढ़िए. For EC, the ideal sequence of subject will be network, signal, control. Then you can go for communication. Signal is the prerequisite. Then EDC, EMFT. Then analog, maths, digital, apti. For EC, this should be the sequence. For practicing, you can follow class questions. चाहे आप YouTube से कर रहे हैं, चाहे आप paid course से कर रहे हैं, whatever questions are there in the lecture, you can practice that. For paid users, you can practice class assignment. Okay, workbook for paid as well as YouTube students can buy Prayas book. Prayas book is available on our website. You can buy this book for practice. And other than that, previous year question. अभी ये मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा. Okay. Now coming to the revision aspect, it is very important for revision beta that you revise using crash course. Why? क्योंकि देखिए जब आप पहली बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको समझ नहीं पड़ेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है. फॉर पीपल हु आर रिपीटिंग इन गेट, हु आर द रिपीटर्स, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट फॉर फ्रेशर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ क्रैश कोर्स बिकॉज दे डू नॉट नो which is important and which is not important. So when you are attending crash course,
You should come to the class after revising your notes. First revise, then attend the class. And when you are revising your notes, do check how the educator has solved the numericals. जब आप रिवाइज कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम्स भी देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं बनाइए, बट एटलीस्ट देख लीजिए कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है. And after attending the class of the crash course, this crash course may be on YouTube, may be paid. In the past few years, I have taken multiple crash courses on YouTube as well. Okay, I have taken multiple crash courses on YouTube as well. So you can revise after attending the crash course. You should solve practice problems. Now for this practice problem, if you are preparing from YouTube, you can go for Prayas Pro. You can go for Prayas Pro. Okay. And after revising a subject, it's very important to attempt subject test. तो अगर देखिए क्रैश कोर्स से तैयारी कर रहे हैं अरुण भाई, तो शॉर्ट नोट्स का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, राइट? इफ यू आर प्रिपेयरिंग और रिवाइजिंग यूजिंग क्रैश कोर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट नोट्स, करेक्ट? So it's very important to follow a crash course which may be on YouTube, which may be in the paid course, and you should follow the notes of that. If you are not able to prepare the short notes yourself, then you should follow the notes of the crash course. Okay. But if you are associated with me in the comprehensive course, I always mark the short notes so that you can prepare your short notes. अगर आप मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जुड़े हो बेटा, तब तो जो है मैं शॉर्ट नोट्स वैसे भी मार्क करके देता हूं. तो आपको बस क्या करना है, उनको नोट डाउन करना है, आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है. लेकिन मेरे बच्चों, इफ यू आर नॉट एबल टू बेसिकली प्रिपेयर यूजिंग अ क्रैश कोर्स, or you are not connected with me in the comprehensive course, then you should basically revise using the crash course. तब आप क्रैश कोर्स से रिवाइज कीजिए if you are not able to make your own short notes. But after revision, do attempt a test to check whether or not your preparation is sufficient. क्या आपकी तैयारी काफी है या उसमें कुछ कमी रह गई, उसके लिए टेस्ट देना जरूरी है. For test, there are two types. First is part test or weekly quiz. This you should prepare or you should attempt when you are preparing a subject. जब आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर कवर हो गया, तो उस चैप्टर का टेस्ट तो लगा ही सकते हैं ना. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग अ सब्जेक्ट, लेट अस से यू आर प्रिपेयरिंग नेटवर्क एनालिसिस and you have covered up to transient, so you can give a test based on the transient analysis. You need not cover entire syllabus for that. अगर आपको ट्रांजिएंट का टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए थोड़ी कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए, सिग्नल सिस्टम आना चाहिए. किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ट्रांजिएंट पढ़ लिया, ट्रांजिएंट का टेस्ट दो. तो ऑलवेज अटेम्प्ट वीकली क्विजेस और पार्ट टेस्ट while learning a subject. Now subject test is after you complete a subject. Once you complete a subject, you should attempt subject test, or you should attempt subject test even after first revision of a subject. जब एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हो या रिवाइज कर रहे हो, तो सब्जेक्ट टेस्ट देना जरूरी है. और मॉक टेस्ट you can start in December, so do not wait till December to purchase a test series. अगर आप दिसंबर तक वेट करेंगे ना बेटा तब टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो इट इज यूजलेस. इट इज अ वेरी वेरी फुलिश डिसीजन, because by December your part test and subject test should already be completed. दिसंबर तक तो पार्ट टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट निपट जाने चाहिए. आप दिसंबर तक वेट क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है. प्रखर भाई देखो, सिग्नल में जस्ट रिमेंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट इनफ. You have to practice a lot of problems based on signals and system, because unless you apply those identities in questions, you will not understand how to recognize which formula is to be used in which problem. जब तक आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला पता सब होगा, लेकिन अप्लाई नहीं होगा. ओके. नाउ डाउट्स, दिस इज फॉर पेड यूजर्स. दे कैन आस्क देयर डाउट्स टू मी ऑन टेलीग्राम or live doubt session. In Telegram, I have appointed a person who has AIR 13 in GATE 2025 in electrical, AIR 34 in EC. They are solving your doubts, and in live doubt session, I will solve your doubts myself. Okay, but this is for paid users, the solution of the doubts. कितने रिवीजन के बाद अभिनंदन? एक रिवीजन के बाद आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो. दिमाग वाला भाई बहुत ही अच्छी बात है, सच में तुम्हारे पास दिमाग है अगर तुमने ये डिसाइड किया हमारा टेस्ट सीरीज ले रहे हो. ठीक है,
So just joking, you can buy any test series whichever you like, that is your decision. अब देखिए नोट्स में अभी बताता हूं यूट्यूब वाले बच्चे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं. पेड वाले बच्चों के पास तो क्या है, दे हैव द ऑप्शन, दे कैन डाउनलोड द नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लेक्चर्स. बट फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स आई विल शो वेयर टू डाउनलोड. डू नॉट मेक कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट, सब चीज हाथ से मत लिखिए बेटा, ठीक है. एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन द पॉइंट्स मार्क्ड इन द लेक्चर. You must always make the short notes based on the points marked in the lecture. PYQ, you should attempt chapter wise. जो previous year question है, after you study one chapter, you should attempt the previous year question of that chapter, and you should go backwards. That is 2025 should be your first priority. You should go backward. So during your preparation, try and solve at least previous 10-year problem. जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम पिछले 10 साल के लगा लो, एंड बाकी आप रिवीजन के दौरान भी लगा सकते हो. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि व्हेन यू आर लर्निंग अ सब्जेक्ट यू शुड सॉल्व द एंटायर पीवाईक्यू. एटलीस्ट सॉल्व 10-year पीवाईक्यू, दैट इज फ्रॉम 2025 to 2016, this much. Then before this you can solve during revision. At least this much you should solve when you are first preparing. Okay. Now how to stay motivated? Let me tell you one thing. Every night before sleeping, do have a vision. Do imagine how it will be like when you crack the exam. जब भी आप सो रहे हैं ना, सोने से पहले एक बार विजुलाइज जरूर करना कि एग्जाम में जब रैंक आएगी, अंडर 100 रैंक आएगी, फर्स्ट रैंक आएगी, तो कैसा फीलिंग होगा, वो दिन कैसा होगा. Keep imagining that because that will fuel your preparation. That feeling, that desire to achieve that level, to get to that mark will fuel your preparation. वो जो अंदर से इच्छा है ना, जो भूख है उस लेवल को अचीव करने की, वो आपकी तैयारी को बेटा फ्यूल करेगी. एंड if you can, do attend the live classes or the live YouTube session so that you stay connected to me and you stay motivated. On Telegram, you can stay connected to other aspirants so that you do not feel lonely, you do not become anxious. And for paid users, they should be regular in the mentorship session. And one thing is very important, that why did you start your journey? This question you should always remember the answer to this. कि आपने क्यों शुरू किया था भाई, क्या पाना चाहते थे, what is your vision, what is your aim? If you remember that, you will keep moving forward or keep cracking short term goal. हमेशा छोटे छोटे गोल अचीव करते जाइए. जैसे फॉर मी, recently my short term goal was completing the crash course for RRB. So if I think very long term till the next GATE exam, I'll not be able to do much. But I do keep short term goals, like what is my goal for the month of April, what is my goal for the month of May. इस तरह के छोटे छोटे गोल रखिए, उन गोल्स को क्रैक करते जाइए, so that you get motivation, you get positivity. Okay. सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 3 to 3 years बहुत अकेलापन होने लगता है. हाउ टू स्टे हैप्पी इन लोनलीनेस? देखो, आई बिलीव वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन शुड एंजॉय देयर ओन कंपनी. हर इंसान को ना देखो अकेले खुश रहना आना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर नॉट हैप्पी अलोन, अदर पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी विद यू. लेट मी टेल यू अ लाइफ एडवाइस. अगर आप अकेले खुश नहीं हो ना, आपकी जिंदगी में कल को कोई भी आएगा, किसी भी रिलेशनशिप में आप जाओगे, शादी करोगे, you will always be depending on the other person for happiness, and then you become a liability. तब आप एक बोझ बन जाते हो, ठीक है? And that is not a good feeling at all. You should be happy. You should have your hobbies. You should have your passion. You should have what you like to do. It may be watching movies. It may be listening to music. It may be going out, watching movie, playing sport, eating out, anything. जो चीज आपको खुशी देती है. कुछ चीजें होनी चाहिए ना भाई लाइफ में. So whatever you feel happy about, reading certain books, reading novels, watching movies, watching web series, eating out, है ना, playing sports, going to work out, whatever keeps you happy. And let me tell you, the easiest out of these is watching movies, reading books, and going to a gym. These three things are very easy and these are very healthy things. ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेंगी, फिजिकलिटी भी डेवलप करेंगी. तो इन चीजों को एंजॉय कीजिए.
बेटा लक्ष्य गेट 2.2 में जो भी कंटेंट है वो गेट 25 वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जो इस साल का पढ़ा रहा हूं वही रिकॉर्डेड कोर्स में डाल रहा हूं, वैसा नहीं है। लास्ट ईयर वाला रिकॉर्डेड कोर्स में रहता, तो दैट इज इन हिंदी, दैट इज नॉट इन इंग्लिश। ओके, मैं गेट 25 के लिए आपका यूट्यूब क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लगाया था, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई दिमाग वाला, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अरुण भाई, why not comprehensive notes? Because making comprehensive notes consumes a lot of time. We can redirect and dedicate that time to solving problems. That will improve our problem solving ability because we have limited amount of time. We need to use the time as a resource very judiciously. Okay. Now let me show you each and everything on the app for YouTube as well as paid users. Okay. Just a minute. Let me log in. Just a minute. Let me just log in. ठीक है, तो चलो पहले मैं YouTube वाले बच्चों को दिखा देता हूं बेटा। So for YouTube student, if you want the notes, you should go to free downloads. Free downloads, if you see, first of all, there is a free course on measurement. Free downloads में measurement का एक free course है. And then you can go to this YouTube lecture PDF. View content. GATE notes are there. Full courses. Signal system, power electronics, digital, power system, analog, control, machine, network, apti, measurement. Then crash course. Power system, maths, control system, analog electronics. Okay. PYQ practice series. All the PYQ practice series PDF is available. Okay. Then one shot series, permutation combination, formula revision, vector calculus, probability, material science. Okay. Even material science notes are available. Okay. Now, if I go to content for AJE exam, this is the PDF for AJE exam. Then microprocessor, all the notes are here for microprocessor. So all these are the available PDFs for you. Now, if you join our live batches, suppose I get into subscription. So if you go into content, beta, you have ESE PYQ. This is the GATE 26 batch in which right now I am teaching network analysis. Okay. So now in the lecture you will find an option of view PDF. Lecture के साथ ही view PDF मिलेगा और यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है. This is the download option here. This is the download option from where you can download the PDF in your own device. Now if you see, this is the format of the PDF and SN means short notes. So I am marking short notes. मैं short note mark करा रहा हूँ. तो अगर मैं short note mark करा रहा हूँ, you just have to write this by yourself or you can take a screenshot and you can make it basically a digital copy. आप digital copy भी बना सकते हैं. So if you see, I have marked short notes. Whatever you have to write in the short notes. So that way it becomes very easy for you to make short notes if you study your comprehensive course with me. So there you get the PDFs. Okay. Let me show you other facilities also. So if I go into GATE 26, this is the workbook folder where you will have the question bank of each and every subject. So question banks are present here. Signal system course will be starting from next Monday. Okay. This is the course structure of signals and system. This is the course structure. Sir, how to know which session is upcoming? If you go into live and upcoming, आपको यहाँ पे signal system के lecture नजर आने लगेंगे. Okay. तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा डेट के हिसाब से. देखो 28 का लेक्चर है, ठीक है, 28 अप्रैल का लेक्चर है. सो यू विल सी व्हाट ऑल लेक्चर्स आर अपकमिंग इन द लाइव एंड अपकमिंग. साक्षी बेटा, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द सोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स. एंड इफ यू सी बेटा, इन माय लेक्चर्स यू विल ऑलवेज फाइंड अ असाइनमेंट. लेट मी शो यू. इन माय लेक्चर्स यू विल ऑलवेज फाइंड अ असाइनमेंट. सपोज आई ओपन अ PDF. Then at the end of the PDF,
ओके, तो एंड ऑफ द पीडीएफ आप देखोगे ना तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं. तो दिस इज द असाइनमेंट फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस. You have the workbook and you also have previous year question. Let me show you PYQs. These are the previous year question. Suppose you go into GATE electrical. So all these are the PDF available on our website. So if you open suppose network analysis. So this is the network PDF chapter by chapter. Chapter by chapter PYQs are available. So all of this I am providing to you with our courses. And suppose you want to practice with YouTube, you don't want to join the course, you have to go into the book section. So Prayas Pro is for revision. इसमें एडवांस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है, इसमें एडवांस्ड क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं होते, टफ क्वेश्चन होते हैं. These are the advanced questions. Then we have the previous year book. The new edition will come very, very soon. Then this is the Prayas book, from where the questions are from basic to advanced. प्रयास बुक के अंदर क्वेश्चन आपके बेसिक से लेके एडवांस तक होते हैं. तो यू कैन बाय दिस बुक इन केस यू विश टू प्रैक्टिस विद द यूट्यूब लेक्चर्स. In case you wish to prepare a particular subject, we have the subject wise courses also here. You can purchase subject wise courses like signal system will be starting next Monday. Right now you can get it at 30% off using EB30. The fees will be 1400 plus GST and you will have these lectures for 1 year. ये लेक्चर आपके पास 1 साल तक रहेंगे, सिर्फ 1400 प्लस जीएसटी में आपको मिल रहा है. These lectures are in bilingual format. Okay, so these are the subject wise courses that you can purchase from our website. In these courses you will have the PDF, you will have the workbook, you will have everything. Volume 1, Volume 2, Prakhar bhai. Volume 1 is for the common subjects for electrical and EC and Volume 2 is for the core subject. तो वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रिकल ईसी के दोनों के बच्चे खरीद सकते हैं. वॉल्यूम 2 ब्रांच के हिसाब से लेना पड़ेगा, whether you belong to electrical or EC. Okay, so like this is my Prayas book for volume 2 for electrical. It contains the core subjects of electrical, only 5 subjects: machine, power system, power electronics, measurement and EMFT. Okay, चलिए. So that's it बच्चों. Whatever resources you can use, whatever is the strategy, whatever are the important topics, I have given you all the details. मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हैं, क्या क्या चीजें आप फॉलो कर सकते हैं. Okay, and now you can decide to join the course, you can decide to prepare from YouTube, you can decide whether to purchase subject wise course, purchase the book, purchase the test series. Test series is available here. यहाँ पे test series भी है बेटा. The right now code is Ankit ESE. Ankit ESE कोड से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल, फॉर EC. ओके, so that's it from my side. I'll see you again in the next session, next video. और पेड टेलीग्राम ग्रुप बेटा सिर्फ पेड यूजर्स के लिए. इट हैज नो सब्सक्रिप्शन फीस. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे देके आप सिर्फ टेलीग्राम एक्सेस कर लो, वैसा कोई सिस्टम नहीं है. ओके, so that's it from my side. I'll see you again in the next video. Thanks.